Okay. Based on the extent to which a reaction proceeds, there may be three types of reactions. So, extent means what? To what extent is the reaction proceeding in the forward direction before it has achieved equilibrium? There are three categories based on this extent. First is the reactions that proceed to completion. Means what? Means that in such reactions, the equilibrium is achieved when extent of reaction is very high. What does that mean? That means large quantities of products are obtained and small quantities of reactants are left unreacted. So the equilibrium will be achieved when large quantities of products are obtained. That means the reaction has moved towards the RHS. So the rate of movement towards RHS is quite high, and so the equilibrium will be achieved when sufficient moles of the reactants have got consumed. So we can say that these reactions proceed almost to completion because only a few moles of the reactants are left unreacted. So at equilibrium, we will have a few moles of the reactant and the number of moles of the product will be quite large. So this is one type, and for such for such reactions, we can say that the value of equilibrium constant is very high. What is equilibrium constant? That we will be doing after some time. As of now, just remember that the reactions that proceed to completion have a very high value of equilibrium constant. Second category will be what? The reactions that proceed to a small extent to yield products. That means the equilibrium is not favored highly towards the right hand side. So only a few moles of product will be formed and most of the moles of the reactant will be left unreacted. So these reactions have a very small extent. So I can say that they have a very small value, a very low value of the equilibrium constant. So in such reactions, equilibrium is achieved when small quantities of products are formed and large quantities of reactants are left unreacted. The value of equilibrium constant is very low for these reactions. So these reactions proceed to a small extent towards the right hand side. So the tendency is more towards the left. And hence we say that the value of equilibrium constant is very low for these reactions. And the third category will be the reactions which have a moderate extent of completion. That means neither is the value of equilibrium constant very high nor it is too low. Right. So we can say that the quantities of reactants as well as products are comparable. So neither can we say that the reactant is left to a very large extent. That means a large number of moles are left unreacted. We don't say that. Also, we do not say that a large number of moles of products are formed. So we should not say that the reaction has proceeded very nicely towards the right hand side. So it is midway. The extent is midway, which means that reactants as well as products will be will be found rather or observed at equilibrium.
So at equilibrium, sufficient moles of reactants and sufficient moles of products will be observed. That means the extent is not that high, also it is not that too low. And hence we say that the extent is moderate. If the extent is moderate, obviously we can correlate it to the value of equilibrium constant, which means that the value of equilibrium constant will also be moderate. It will not be very high or low. That is why we are saying that the quantities of reactants and products are comparable at equilibrium. Okay, now, so these are the three categories of reactions based on the extent to which a reaction proceeds in the forward direction. And also the extent depends on experimental conditions like temperature, pressure, etc., which we'll be studying later. But as of now, we should know that the extent is dependent on temperature and pressure. So a reaction which may have a low value of equilibrium constant at some temperature may have some other value of equilibrium constant at a higher temperature. If we change the pressure, then also the conversion, there's the percentage conversion or the degree of dissociation gets affected, which means that the extent of the reaction has changed. Because extent is nothing but directly proportional to the degree of dissociation of a reactant. Okay, so far we discussed chemical equilibrium, that means the equilibrium that was achieved in chemical reactions. Now we can talk about some examples of physical processes where equilibrium is achieved. That means no chemical reaction occurs there. So we are not supposed to call it chemical equilibrium. Chemical, the word chemical implies or directly it is used only for chemical reactions where reactions are occurring. That means some reactant is getting converted to some other product. A new species is formed in a chemical reaction. But in a physical process, no new species is formed. In a physical process, no new species is formed. Means chemically, the formula does not change. The chemical formula does not change in any physical process. So, an example, some examples of physical equilibria are these: phase changes, okay, now these are some examples of physical equilibria. Again, in each of these, we can say that the rate of the forward process is exactly equal to the rate of the backward process at a particular temperature. Now see, let's take one example of vapor liquid equilibrium. Vapor liquid equilibrium. What does that mean? That means that equilibrium is existing between liquid and vapors of the same substance. So let's see that.
Now here I have a bowl containing water. Okay, liquid water. So water is kept inside a bowl. And now, okay, another thing you have to keep in mind, I mean, just for this experiment, I forgot to mention. Before I kept the bowl inside, before I kept the bowl inside, I had ensured that here, that is around, I mean, above this bowl, or rather, I should say that when the bowl was not present inside this entire enclosure, only dry air was present. What was present? Dry means what? No moisture was present inside this air, and hence I'm calling that air dry air. Dry air. Dry air का मतलब क्या है? It did not have any water droplets, any vapors of any liquid. So it was plain and simple air, and the pressure of that air was 1 atm. So ambient means I ensured that it did not have any water vapors inside it. Okay. So what I did, I took only dry air. अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या लो, सिर्फ ड्राई एयर लो या इवैक्यूएटेड लो, वैक्यूम लो. मैं ले रहा हूँ ड्राई एयर. एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूँ उसमें ड्राई एयर है. अब ड्राई एयर का मतलब व्हाट विल बी द प्रेशर inside this enclosure? This will be the value. Correct? Okay. Simply dry air. That was kept, I mean, that was present initially. Initially means what? When the bowl was not present. That means the pressure inside this enclosure was 1 atm before the bowl had been kept. Now, case 2. What is case 2? Case 2 is when I have a bowl of water kept inside. I will connect a manometer here. And this manometer is open to the atmosphere. So I can say that 1 atm is the pressure acting because this end is open to the atmosphere. Now, here I have mercury. Mercury is filled inside this manometer. Okay. Inside this, I have mercury filled. Now, before this bowl was present, again, let's go back to case 1. Let's go back to case 1. Case 1 means what? Means the bowl was not present. I had only dry air, which had a pressure of 1 atm. So, in that case, here also pressure is 1 atm. Here also pressure is 1 atm because the end is open to the atmosphere. And so I can say that the mercury will be like this. It means the levels of mercury will be on the same horizontal line. Correct? So when there was no water present, this was the condition, this was the arrangement. This was the arrangement when only dry air was present without any moisture in it. And outside also it was 1 atm. So there was no difference in the levels of mercury in the two limbs of the manometer.
Now, case 2, I place a bowl of water. After some time, what will happen? Some vapors will be formed here. These vapors formed will be as a result of evaporation that has taken place from the surface of the water kept inside bowl. So more and more molecules will evaporate over a period of time. But then after a certain point of time, some molecules will start condensing back to this bowl. And eventually, the rate of evaporation of water will be exactly equal to the rate of condensation of the vapors back to the bowl. That is called equilibrium, because then the quantity of vapors over the surface of water will remain the same. And that value of pressure, which is exerted by the vapors at equilibrium, is called vapor pressure. And then you will see a difference in the levels of mercury. Now this will be the mercury. So this pressure developed, this pressure which is developed as a result of vapors which have accumulated is nothing but the vapor pressure of water. I mean, whatever liquid I take, so here I've taken water. And vapor pressure is a property which is only for equilibrium. That means at equilibrium, the rate of the rate of evaporation is exactly equal to the rate of condensation of the vapors. ये जो difference in limbs है mercury का, so difference in the levels of mercury is indicating the pressure, is indicating that some pressure has been developed. Why? Because the vapors are going to push in this way. पुश करेगा तो मर्क्यूरी यहाँ से नीचे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लिम्ब में, और राइट हैंड साइड लिम्ब में वो मर्क्यूरी ऊपर चला जाएगा. इसके लिए दिस डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड. Now, after again some time, if you observe, you won't find any change in the levels of mercury. Exactly same level पे रहेगा अभी जैसा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम हो चुका है. So vapor pressure is a property of equilibrium. It will not change after some time again the value will change. Unless temperature changes, vapor pressure doesn't change. So if I have maintained same temperature, the vapor pressure will not change. So this is an example of which type of equilibrium? This is an example of VLE. What is VLE? Vapor liquid equilibrium. Short form is VLE. Vapor liquid equilibrium is established inside a closed container wherein I have vapors of a liquid exactly in equilibrium with the liquid at a particular temperature. And hence we say that vapor pressure depends only on temperature. It does not depend on volume available. It does not depend on the moles of liquid taken. And that is why we also say that vapor pressure is an intensive property, because it is independent of moles of liquid taken. ऐसा नहीं कि मैं अगर ज्यादा बड़ा बोल ले लूंगा और बोल में ज्यादा पानी भर लूंगा तो फिर वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. ओके फाइन. सिमिलरली यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं आइस और वाटर दोनों को एक साथ रख दूं एक क्लोज्ड वेसल के अंदर, यहाँ पे आइस भी है वाटर भी है. So if I maintain the temperature as 0 degrees Celsius and the pressure as 1 bar, I won't see any difference in the level of water. The level of water will remain the same. Why? Because
ice and water are in equilibrium with each other at 0 degrees Celsius and 1 bar. So the level of water will not get affected. So that is an example of solid-liquid equilibrium. Similarly, third example is solid-vapor equilibrium, that is sublimation of iodine is shown. इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं एक बॉटल टाइप ले लूं और यहाँ पे कॉर्क लगा दूं, कॉर्क क्लोज करने के लिए, then what will happen? इवेंचुअली ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये कलर का, यहाँ पे मानो सॉलिड आयोडीन है तो वेपर्स आयोडीन के बनेंगे एंड यहाँ पे आपको दिखने वाला है क्या, वायलेट कलर. Initially you will realize, I mean, when you have just placed the solid, you will feel that, not feel rather, you will observe, I should say. You will observe that the color is intensifying, which means that the forward process is quite high. I mean, rate of the forward process is quite high. So the violet color will gradually deepen. But after some point, that is after a period of time, there will be no change in the intensity of color shown. That is because the reverse process also has started. So some vapors of iodine have also started getting converted to solid. So the color, they may ask a question, what happens to the color after some period? So after some time, we will see that the color will not become deeper or lighter. The intensity of color will remain the same, which means that iodine has reached its equilibrium. Violet coloration will be produced and that intensity will initially increase, but over a period of time, equilibrium will be established, and after equilibrium is established, we will see that there is no further change in the intensity of color shown. Which means that equilibrium has been established. All these examples are physical equilibrium. Physical equilibrium. Fine. Next comes law of mass action. Law of mass action is going to be used in this chapter while we solve questions. Now, what is this law of mass action? Law of mass action says that, now see, this is a theoretical portion, that means the statement which you see is completely theoretical. Before going inside the statement, let me tell you the mathematical interpretation, then it will be easy for us to understand. Let's say we have a reaction like this, A plus B giving C. And the reverse reaction is indicated by C disintegrating to forming B, which means that this is a reversible reaction. And if I want to write the law of mass action for this, then I have to write like this. RF. RF means rate of the forward reaction. RF is equal to, or rather proportional to, concentration of the species being consumed to the power of its stoichiometric coefficient. There are two reactants which are getting consumed in order to form C. So if I'm talking only about the forward process, then this will be the law of mass action for the forward process. That is, RF is directly proportional to the product of concentrations, and each concentration should be raised to the stoichiometric coefficient of that particular species. This is called law of mass action. So mathematically, we can write this. The rate of consumption is directly proportional to the product of active masses of the species being consumed, and each active mass must be raised to the corresponding stoichiometric coefficient. Active mass का ये जो मतलब है, इसका मतलब क्या है? Concentration.
which is moles per liter. Moles of the species upon liters of the vessel is called concentration of a species here. Active mass बोलते हैं उसको. Initially this term was used when the scientist gave this theory. Active mass बोला था उसमें. The active mass को बाद में हम लोगों ने concentration कह दिया. Now if I want to write down the reverse, the rate of the reverse reaction, the rate expression for the reverse reaction, then I have to write like this. RB is proportional to concentration of C raised to 1. This is going to be the rate law for the, or rate expression for the reverse reaction. Because when I'm talking about the reverse reaction, then C is going to be my reactant. Because I'm talking about C giving A and B. So C is going to be my reactant and A and B are going to be my products. So rate of the forward reaction and rate of the backward reaction, both rates I can write for a reversible reaction. If I want to write the law of mass action for this, now again, RF is proportional to this. This will be the rate of forward process. Rate of backward process will be RB is proportional to this. So rate of the backward reaction is proportional to concentration of C raised to 3. Because 3 is the stoichiometric coefficient of C. So this is the mathematical interpretation of law of mass action. उसी को theoretically लिखा है मैंने ऊपर, इतना जो लिखा है ये सब theoretically है, but आपको उसका interpretation जो है वो समझना चाहिए. And we are talking about elementary reactions. Now what is an elementary reaction? This law of mass action is applicable for elementary reactions only. Means what? Elementary reaction is a reaction which occurs in one single step. So in the same step, the product will be formed. That means what? If A is reacting with B, that means A is reacting with B to form C. This C is my final product. ऐसा नहीं है कि C कोई intermediate है और वापस C will transform itself and give me something else. No, C is the final product. It means A has combined with B and I have got C. Such a reaction is called a single step reaction. Single step, also called elementary reaction. कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो बाय डिफॉल्ट वो एलिमेंटरी होगा, क्योंकि वो दिख रहा है सीधा कि ए और बी मिला के सी बन रहा है और सी पीछे ए और बी दे रहा है. मतलब क्या? वो एलिमेंटरी हो गया. मतलब उसका फॉरवर्ड रिएक्शन इज वन एलिमेंटरी रिएक्शन, उसका बैकवर्ड रिएक्शन इज द अदर एलिमेंटरी रिएक्शन. So I can say that a reversible reaction comprises of two elementary reactions. I repeat, a reversible reaction comprises of two elementary reactions. Which two? One is the forward reaction and the other one is the backward reaction. So every reversible reaction is made up of two elementary reactions. Okay. Elementary का दूसरा नाम क्या है? Single step. एक स्टेप में रिएक्शन होके खत्म. Single step reaction, which is called elementary reaction. So any reversible reaction is comprising of two elementary reactions. Fine. Now, law of mass action is clear to everybody. Now we can again go through the gist of this. So for a reversible reaction of this kind, we may write the following expressions. Just go through them. I'm giving you 4 minutes. In 4 minutes, go
An elementary reaction is a single step reaction. Means what? The product that we are interested in is formed in just one step. ऐसा नहीं है कि बीच में कोई इंटरमीडिएट बन रहा है और फिर वापस वो इंटरमीडिएट आपको कुछ और दे रहा है, ऐसा नहीं है. सीधा ए और बी रिएक्ट हुए और बन गया. चलो एक काम करते हैं, मैं एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आगे चल के ये काम आने वाला है. So now if I talk about the elementary reaction, एग्जाम्पल देते हैं. अगर मानो ऐसा कुछ मैंने दिखाया, क्या दिखाया? I have to close this file once. Now see, I am explaining elementary and non-elementary reactions. आगे चल के आपको डिटेल में ऑर्गेनिक में आएगा ये. But as of now, since you wanted a clarity, I mean you wanted a better exposure, I will give you that exposure. So if I have this, now this is an elementary reaction. This is an elementary reaction. मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा ये इसके साथ रिएक्ट किया और ये बन गया एलिमेंट्री रिएक्शन. अब मैं एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन दिखाऊंगा. ये क्या था? दिस वाज एलिमेंट्री. अब एक नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन दिखाता हूं. Now this is a non-elementary reaction. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, ये दो स्टेप्स में होता है. स्टेप 1, ये एक स्टेप होता है. ये बॉन्ड टूटता है सी और बी के बीच का बॉन्ड. That too, it breaks heterolytically, and we get this species. An ion we get which is positively charged, and we get bromide ion as a negatively charged ion. सेकंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप 2 में ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना, इसके साथ रिएक्ट करता है दूसरा वाला जो आपका रिएक्टेंट है, यानी ये वाला. So
इफ आई कंबाइन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करूं, स्टेप 1 और स्टेप 2 को, तो मुझे ये ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। ये जो रिएक्शन मैं लिखा था ये तभी मिल रहा है अगर मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड करूं। ऐसा नहीं है कि कोई एक में मिल गया, मतलब ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, पहले ये होता है उसके बाद ये होता है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कि कौन कितने स्टेप्स में होगा। अगर ये 2 स्टेप्स में हो रहा है या 2 से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन एलिमेंटरी रिएक्शन। और अगर एलिमेंटरी है तो मतलब एक ही स्टेप में होके खत्म हो गया, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ बना और वापस उस चीज पे अटैक हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो एलिमेंटरी और नॉन एलिमेंटरी का डिफरेंस आई गिव यू नाउ। अ नॉन एलिमेंटरी रिएक्शन विल हैव एटलीस्ट 2 स्टेप्स। तो अगर हम लोग अभी लॉ ऑफ मास एक्शन बोलेंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हमें नॉन एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए हर एक इंडिविजुअल स्टेप के लिए देखना पड़ेगा। तो हर एक इंडिविजुअल स्टेप के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। ओके फाइन। So this was the example of elementary and non-elementary. सर 1 मिनट के लिए स्टेप 2 दिखाएंगे वापस से। हो गया? यस सर। Okay. I'll close this file. Okay, for your information, you don't need to know the examples of elementary and non-elementary reactions now. Forget that. That part will be in 12th standard. So now you don't have to worry about identification of elementary and non-elementary. That is not required now. As of now, we are dealing with only and only reversible reactions in this chapter. So all reversible reactions will be comprising of elementary reactions. Okay, fine. So law of mass action we have covered. After law of mass action, we are supposed to know certain mathematical expressions. So first is rate of forward reaction is this. Rate of backward reaction is equal to this. What is Kf and Kb? Kf is called rate constant for forward process. Kb is called rate constant for the backward process. Rate constant for forward reaction, rate constant for backward reaction. Small kf and small kb. Then at equilibrium, we know that rate of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction. So this is what I can write at equilibrium. If I write this, then I can rearrange this equation. And now you see, I get a quantity Kf upon Kb. So I get a ratio. Kf upon Kb is a ratio. This ratio is called equilibrium constant. So what is equilibrium constant? If I ask you to define it, then you will define it in this manner. The equilibrium constant for any particular reaction is defined as the ratio of forward rate constant and backward rate constant. It is Kf upon Kb, not Kb upon Kf. Okay. It is Kf upon Kb, that is rate constant for forward process upon rate constant for the backward reaction. And since I've used concentrations in the rate expressions, hence I denote this as Kc. So capital K subscript small c is called equilibrium constant in terms of concentrations. That C denotes concentration. रेट लॉ के अंदर आप पार्शियल प्रेशर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी तक यूज किया नहीं है, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन यूज किए हैं। इसके लिए मैंने हर चीज को कॉन्सेंट्रेशन के इसमें लिखा है, यानी मोल पर लिटर। ओके, सो
Mole per liter is what I have used. Whenever we use moles per liter, then we have to say that capital K subscript C. That means Kc is the value of Kc is the notation for equilibrium constant. So Kc is the notation when we have everything in moles per liter. And these values of concentrations are only at equilibrium. Means what? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ नहीं है तब तक अगर आप वैल्यूज मेजर करोगे और ये वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करोगे तो फिर उसको केसी नहीं बोलेंगे. केसी सिर्फ उसी को बोलेंगे जो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस के वैल्यूज हैं उनको लेके आपने अगर कैलकुलेट किया है ये रेशियो तो ही हम लोग बोलेंगे केसी. नहीं तो अभी तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, पहले ही तुमने ले लिया मेजर करके कैलकुलेट कर दिया तो उसको केसी नहीं बोल सकते. So only and only at equilibrium when you measure the concentrations and then when you calculate the value of this ratio, you can call that value Kc because Kc will only comprise of values at equilibrium. You cannot measure the concentrations at any other instant of time and then calculate Kc because that will not be called Kc क्योंकि तब तक equilibrium achieve नहीं हुआ है. That is why bracket के अंदर मैंने लिख दिया है. Okay. So everything is in moles per liter. Rate constant for forward reaction is Kf. That is this. Rate constant for backward reaction is Kb. Now comes another important point. कोई पूछेगा what is the unit of Kc? तो आप बोलोगे ये कि unit of Kc is not fixed. It depends on the stoichiometric coefficients. Why? Check करो Kc का expression. यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल सी के ऊपर स्मॉल सी, कैपिटल डी के ऊपर स्मॉल डी एंड सो ऑन, व्हिच मींस दैट एवरी कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू सम एक्सपोनेंट and we don't know what the values of these exponents are because they will depend on the stoichiometric coefficients of that particular reaction that we have taken. And so the value, I mean the units of Kc will also depend on the stoichiometric coefficients of the reaction. So I cannot say that Kc has fixed units. C, D, A, B, small c, small a, small b, small c, small d, small a, small b के जो वैल्यूज है उन पर डिपेंड करेगा केसी का यूनिट. तो केसी कभी डायमेंशन लेस भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? मानो ऐसा कोई रिएक्शन है, ऐसा we have done reactions, some reversible reactions in the last lecture. And I told you to learn some reactions, of which one of these was this reaction. So one of those reactions is this 2HI decomposing to give H2NI2. मतलब क्या? अब इसके लिए निकालो यूनिट ऑफ Kc. तो क्या होगा? Kc का यूनिट ऐसा होगा, ऐसा होगा. ऊपर मोल्स पर लीटर, इसका भी मोल्स पर लीटर, तो हो गया मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में भी मोल पर लीटर होल स्क्वायर, सब मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, कट गया पूरा मोल स्क्वायर पर लीटर का डायमेंशन. तो डायमेंशनलेस हो गया ये. तो यहाँ पे कैसे क्या हो गया? डायमेंशनलेस हो गया. तो इसके लिए केसी का फिक्स्ड यूनिट नहीं है. ओके. आरएफ एंड आरबी तो मैंने बता दिया ऑलरेडी. ओके. ना कॉमन सेंस अप्लाई करके 7th and 8th भी बोल सकते हैं हम लोग. If RF is more than RB, the net reaction is in the forward direction. If RB is more than RF, the net reaction is in the backward direction.
जो डोमिनेटिंग है तो उसके हिसाब से होगा नेट रिएक्शन, जो ज्यादा है वो पुश करेगा, आई मीन वो अल्टीमेटली डिक्टेट करेगा जो ज्यादा है, राइट। एंड ऑब्वियसली if RF is same as RB then we have equilibrium, तो equilibrium अचीव हो चुका है if RF is same as RB, so that means the net reaction is not happening in any direction and hence it's a dynamic equilibrium, so the net result is zero wherein there is no net movement because exactly RF is same as RB. That C below K, which is used as a subscript, is nothing but telling you that we have used concentrations of species. I also told you that we can use partial pressures, and if we use partial pressures, then we will call it Kp. I mean, the notation will be Kp, where small p will be used as a subscript for K. And now I will say that in this expression, I will use only and only partial pressures. The unit of Kp is not fixed. Again, it will depend on the stoichiometric coefficients of the reactants and products. So if we have this reaction wherein A, B, C, and D are the gaseous components present, then I can write Kp in terms of partial pressures. Again, these partial pressures will be only for equilibrium. So for solids and liquids, what to do? I have not yet discussed that. We will discuss it after some time. So Kp is equal to this in terms of partial pressures. मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा किसी भी इंस्टेंट पे आपने मेजर कर लिया और फिर डाल दिया ये सब, तो वो केपी या क्या केसी नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे अगर आपने मेजर किया है तो ही वो वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड करेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को या इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स को, which means Kc and Kp के values are fixed for a particular reaction at a particular temperature. मतलब क्या, भले ही मैं कैसे भी उसको मेजर करूं, अगर अलग अलग इंस्टेंट पे अगर मैं मेजर करूं कॉन्सेंट्रेशंस को या पार्शियल प्रेशर्स को और फिर मैं ये कैलकुलेट करूं फॉर्मूले के हिसाब से, जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो वो केपी या केसी नहीं कहलाएगा, क्योंकि केपी और केसी सिर्फ तभी कहलाता है जब इक्विलिब्रियम पे आए फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूं केपी या केसी, उसके पहले नहीं। तो उसके पहले का क्या, तो उसके पहले भी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसको केपी या केसी नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्यू, क्यूसी या क्यूपी बोलेंगे, विच इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो वो किसी भी एक इंस्टेंट पे आपने अगर देखा कोई कॉन्सेंट्रेशन लेके तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूसी या क्यूपी, और अगर सिर्फ इक्विलिब्रियम पे देखा तो उसको बोलते हैं केसी या केपी। Very important point. Many questions are based on this point. The value of equilibrium constant depends only on temperature. It does not depend on any other parameter. सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है? हाँ, तो उस पे आएगा ना अल्टीमेटली kf अपॉन kb है ना, तो ऑब्वियसली kf और kb के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। सर देन फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो सर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा ना? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रेशर पे डिपेंड करेगा, बट अल्टीमेटली वो एडजस्ट होके वो रेशियो है ना kc या kp, तो तुम्हारा वो मोल्स चेंज हो जाएंगे या पार्शियल प्रेशर्स चेंज हो जाएंगे, करेक्ट।
लेकिन वैल्यू ऑफ केसी या केपी विल नॉट चेंज, दैट वे इट इज। जो रेशियो है ना, तो वो रेशियो चेंज, इट्स लाइक इफ आई टेल यू दैट आई हैव अ रिएक्शन, इसके लिए एक वंडरफुल एग्जांपल है मेरे पास, बट अभी वो मैं नहीं कर सकता। तो वो एग्जांपल जब करेंगे समझ में आएगा कि अगर मैं चेंज कर रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स, अगर मानो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे x मोल्स इक्विलिब्रियम पे है, y मोल्स इसके z मोल्स, मतलब क्या? तो Kc क्या होगा इसका? मान लो अगर 1 लीटर ऑफ वेसल है तो z अपॉन xy हो जाएगा। नाउ प्रेशर चेंज कर दिया, मानो क्या किया? प्रेशर चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मानो अभी मेरे पास A, B और C है मोल्स, तो अब Kc क्या होगा? C upon AB. Now obviously Z is not equal to C, A is not equal to X, and B is not equal to Y. But Z upon XY will be equal to C upon AB. That is how it is. Okay, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. So it's the ratio that matters. Individually कुछ भी सेम नहीं रहेगा और अल्टीमेटली सब सेम, अल्टीमेट वैल्यू जो Kc या Kp का है वो सेम रहेगा। All right. Do you want to do a question based on Kc or Kp, or you want to carry on with theory now? सर क्वेश्चन ओके, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, तब तक देता हूँ क्वेश्चन ढूंढ के, मुझे 1 मिनट का टाइम दो।
ओके, क्वेश्चन लिखो। Now, first of all, whenever you're doing a question based on this chapter, आपको ये करना है पहले, क्या बोलते हैं, रिएक्शंस जो मैंने लास्ट लेक्चर में किए थे वो रिएक्शंस पहले पता होने चाहिए। जितने रिएक्शंस मैंने रिवर्सिबल के दिए थे सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, then only you can go ahead. So start. I told you last time about degree of dissociation and percentage dissociation also. So you should be able to solve this question. 1 atm मतलब total pressure of the system is 1 atm. Total pressure of the system is 1 atm. Oh, sorry. 2 atm. Solve this. First question है तो टाइम ज्यादा लो, it's okay. रिएक्शन देखो और चालू करो।
Okay. What is the answer? Which reaction will you use? PCl5 gives PCl3 plus Cl2. And all are gases, correct? Okay. Fine, that is okay. Then after that, केमिकल रिएक्शन है तो मतलब मोल्स में काम करना है, ग्राम्स में तो काम कर नहीं सकते. तो ये क्वेश्चन क्यों दिया था? क्योंकि जो इसके पहले मैंने बोला था ना कि the value of equilibrium constant does not change unless temperature changes. इसके लिए क्वेश्चन दिया था, फिर मैंने एग्जांपल दिखाया था A upon BC something ऐसा ना, उसके लिए. ऐसा है रिएक्शन. तो पहली बात रिएक्शन पता होना चाहिए. ऐसा होगा T is equal to 0, correct? Okay, so remember one thing, कुछ अगर बोला नहीं है, कुछ अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कितने मोल्स से आपने चालू किया है रिएक्शन को, तो ऑलवेज रिमेंबर इस चैप्टर में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो ही लेना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स. If nothing is mentioned about the exact number of moles, then take the coefficient equal to the number of moles for T equal to 0. Okay. Now we can easily go ahead. अब देखो, I have discussed this last time. X moles of PCl5 have reacted, so 1 minus X moles of PCl5 are left behind. What should I write here? X and here also X. हमेशा मोल्स में काम करना. Okay. फाइन, यहां तक सबको आया होगा. अब कोई बोलेगा कि ठीक है यहां तक आ गया, केसी का यूज करते हैं. केसी का यूज कर सकते हो अब, लेकिन केसी का यूज इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर के टर्म्स में इंफॉर्मेशन देके रखा है. इफ प्रेशर इज गिवन इन द क्वेश्चन, डोंट यूज केसी, देन यूज केपी. So I will use Kp. Kp will be equal to partial pressure of product
which is PCl3 case into partial pressure of the other product upon partial pressure of this reactant. सर हमें क्या आ जाएगा? पता कैसे चल रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे है ऑलरेडी? नहीं, एट इक्विलिब्रियम ना, इसलिए तो एट इक्विलिब्रियम लिया है। कोई भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अल्टीमेटली तो वो इक्विलिब्रियम में पहुंच ही जाएगा ना। बट ये मेंशन नहीं होना चाहिए क्या क्वेश्चन में? नहीं, आई टोल्ड यू ना, दोस 10 रिएक्शंस और 12 रिएक्शंस व्हिच आई गेव यू ना, वो मेंशन नहीं होंगे कि वो रिवर्सिबल है। वो तुमको याद करने पड़ेंगे कि वो 10 रिएक्शंस के बारे में बात की जा रही है, मतलब वो इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात कर रहे हैं। सर लेकिन रिवर्सिबल वालियों में भी तो कुछ टाइम के बाद ही इक्विलिब्रियम अचीव। हाँ, तो इसके लिए एट टाइम t इक्वल टू t लिया है ना मैंने, एट इक्विलिब्रियम। दिस व्हेनेवर आई राइट दिस थिंग ना, दिस मींस नॉट इक्विलिब्रियम। उसके पहले के बारे में वी आर नॉट कंसर्न, क्योंकि वो तो चेंज होता जाएगा ना, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम तक पहुंच ही जाएगा कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन। यस समझ गई। ओके, तो ऐसा होगा। Let's go ahead with the partial pressures. What is a partial pressure? According to Dalton's law, partial pressure is mole fraction multiplied by total pressure. Mole fraction of PCl3 will be x upon 1 minus x plus x plus x. That is x upon 1 plus x. So x upon 1 plus x multiplied by PT, which is total pressure of the system. ऐसा ही क्लोरीन के लिए भी आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन इनटू पार्शियल into total pressure of the system. PT is called total pressure of the system, and mole fraction of PCl5 into total pressure of the system. ऐसा आ जाएगा Kp का वैल्यू। मोल फ्रैक्शन into total pressure is partial pressure. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो कौन बचा रहा? x स्क्वायर अपॉन 1 minus x into 1 plus x और ऊपर PT. ओके, पुट द वैल्यूज नाउ। क्या है? PT का वैल्यू 2 atm है, 2 atm, and yes, always use atm for this chapter. Okay, and volume should be in liters. Now what is percentage dissociation? 40%. मतलब क्या? I told you degree of dissociation को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो percentage dissociation आ जाएगा। What is degree of dissociation here? It is x upon 1. This is the degree of dissociation of PCl5. Why x upon 1? Because x moles are reacted and initially we had 1 mole. So x upon 1 is the degree of dissociation of PCl5. So x upon 1 into 100 is 40, which means x is 0.4. 0.4 स्क्वायर है, so 0.4 into 0.4 into 2 आ गया ऊपर, नीचे आएगा 1 minus 0.4. 1 minus 0.4 is 0.6 and this will be 1.4. यह आ गया आपका Kp वैल्यू। इसको सॉल्व मत करो, ऐसे कैसे रखो फिलहाल। ऑलराइट, वापस अभी केस 2 लेते हैं जहाँ पे प्रेशर को चेंज कर दिया है हम लोगों ने, एंड नाउ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.8. Why? Because percentage dissociation is 80%. वापस I can write the same expression for Kp. I'll say now Kp will be equal to x square. x के बदले में 0.8 लिखना पड़ेगा अभी। नया प्रेशर है तो Pt पता नहीं वो क्या है अभी। 1 minus x into 1 plus x. 1 minus x will be 0.2 and 1 plus 0.8 will be 1.8. This is the new value of Kp if the pressure is changed. That is the total pressure is now something different. Initial pressure total कितना है at equilibrium? 2 atm. ये at के बाद जो रहता है ना, at के बाद जो प्रेशर रहता है, याद रखो, वो at के बाद जो टोटल प्रेशर दिया रहता है वो टोटल प्रेशर at equilibrium होता है। at के बाद जो प्रेशर रहता है that is the pressure of the system at equilibrium, the total pressure of the system at equilibrium. तो वही पूछा है कि at what pressure will PCl5 be 80% dissociated? तो मतलब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कब? जब 80% डिसोसिएशन हो। नाउ आई हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ Kp. अब दोनों Kp सेम होंगे, Kp कैन नॉट चेंज बिकॉज़ टेंपरेचर इज कांस्टेंट। अनलेस टेंपरेचर इज चेंज्ड, Kp डज नॉट चेंज। दोनों को इक्वेट कर दो अभी, हो गया यहां से।
ये 0.4 into 2 0.8 है, तो ऐसे 0.8 चला गया, करेक्ट। This is 4. This will be 10. 4 upon 0.4 is 10. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे 10 pt upon 1.8 is equal to 1 upon 0.6 into 1.4. इस 1.8 को इधर लेके जाओ तो ये 3 हो गया, 10 को इधर लेके जाओ 3 upon 14 हो गया. That means pt is equal to 3 upon 14 atm, which is 0.214 atm. Final answer is this. क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? All right. Any doubt anybody has? I'll close this file. That's why I'm asking. ये काम करो, ये क्वेश्चन पूरा लिख लो अच्छे से, इसका सोल्यूशन भी अच्छे से लिख लो. Because I'm not sending this file now. I did just close this. Because ऐसे बीच में मैंने किया ना ये क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बाद में करेंगे तभी I'll send. फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया तो लिख लो आप अभी का. So you can write case 1 and case 2. पहले case 1 और फिर case 2. Case 2 में ये नया वैल्यू ऑफ Kp जब 0.8 वैल्यू है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो Kp क्या आएगा ऐसा लिखो case 1 case 2 करके, and then you say that since Kp does not change unless temperature changes, therefore the Kp in case 1 will be equal to Kp in case 2. और फिर इक्वेट कर दो दोनों Kp वैल्यूज को. फिर फाइनली आप लिखो ये कि फाइनल प्रेशर इज 0.214 atm. बंद कर दूं ये फाइल? हो गया सबका लिख के? Okay, so I'll close this file. Okay. We are back to theory. Coming to this point now. If Kc or Kp is very high, then it means that the formation of products is favored and the equilibrium is shifted significantly towards the right. मतलब काफी टेंडेंसी ज्यादा है प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड की ओर जाने की, और इसके लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा है, मतलब एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन काफी ज्यादा है.
So at equilibrium we will have significant quantities of products and only a few moles of reactants will be left unreacted. इसका मतलब है Kc और Kp बहुत ज्यादा है, मतलब almost it is like an irreversible reaction. मतलब क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में वो बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, पीछे जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो थोड़ा सा ही हो रहा है. So I can say almost it is proceeding towards completion. And उल्टा भी हो सकता है. That is, if the value of equilibrium constant is very low, then it means that the formation of products is not that favored. I mean, it is not significantly favored, and so only small quantities of products are formed at equilibrium, indicating that the reaction is significantly shifted to the left. ऐसा आपको एग्जाम में पूछते हैं, which of these has a very high tendency to form products? तो उसके लिए आपको ये चुनना पड़ेगा जिसका Kc या Kp बहुत ज्यादा रहेगा. या फिर ऐसा पूछते हैं, which of these is almost complete? Which of these is almost complete? तो उसके लिए भी वही हुआ मतलब. So you have to choose that reaction which has a high value of K. Capital K लिखो, हाँ, small k मत लिखना. Small k का मतलब होता है rate constant. Capital K का मतलब होता है equilibrium constant. So be careful when you are writing constants. अभी आता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में डिस्कशन. अभी देखो हम लोगों ने गैसेस के बारे में डिस्कस किया है काफी कुछ. अभी तक जो भी किया है सब गैसेस को लेके किया है. हर रिएक्शन में मैंने गैसेस लिए थे. व्हाट अबाउट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स और लिक्विड्स, और बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स? तो पहली बात मैं एक चीज क्लैरिफाई करूंगा यहाँ पे कि क्या कि देयर इज वन चैप्टर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम व्हिच वी विल बी डूइंग आफ्टर दिस चैप्टर गेट्स ओवर. तो उस चैप्टर में हम लोग एक्वस सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं, यानी उस चैप्टर में हम लोग को जो भी फेज है वो एक्वस फेज का काम है, यानी गैसेस के साथ कोई डीलिंग वहां पे नहीं है. तो अलग से वो चैप्टर इसलिए बनाया गया है बिकॉज एक्वस सॉल्यूशंस में वी आर डीलिंग विद स्पीशीज व्हिच आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो अलग एक चैप्टर है इसके लिए. अभी हम लोग जो डील कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग गैसेस के साथ, मतलब जिन रिएक्शंस में कम से कम एक गैस हो उनके साथ डील कर रहे हैं. So get that thing clear कि अगर आपका ये सवाल आता है कि what about reactions involving only aqueous solutions, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वो इस चैप्टर में वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. So in this chapter we are discussing reactions involving gases and solids. I mean, a reaction should have at least one gas. Along with that, there may be other things which are solids or liquids, but at least one gas must be present. तो हम लोग ये इस चैप्टर में ले रहे हैं. Okay, now coming to solids and liquids. अब देखो, you know one thing that if a gas is present inside a closed vessel, then the entire vessel is available for the gas. That means a gas occupies the entire volume available to it. But a solid cannot do that. Even a liquid cannot do that. तो जो solid या liquid substance होता है उनका खुद का एक वॉल्यूम रहता है, वो पूरे कंटेनर के अंदर घूम नहीं सकते, जबकि एक गैस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम यूज कर सकता है अपने मूवमेंट के लिए. दैट इज व्हाई व्हेन वी आर टेकिंग द एक्टिव मास ऑफ एनी गैसियस कंपोनेंट, एक्टिव मास क्या होता है मैंने आपको बोला है कंसंट्रेशन व्हिच मींस मोल्स पर लीटर. तो मोल्स पर लीटर जब हम लोग लेते हैं वो लीटर किसका लेते हैं, मैंने बोला है कंटेनर का वॉल्यूम लो, कंटेनर का वॉल्यूम लो. जब भी गैसियस स्टेट पढ़ा था तभी भी तुम लोगों ने ही किया था, कंटेनर का वॉल्यूम लेते थे.
किसमें PV is equal to nRT में, आइडियल गैस इक्वेशन में. Also in the real gas equation if I write, तो भी यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम लेते हो आप लोग. I hope you all remember that. Now, so this V is what? The entire volume of the container in the real gas equation. That is PV is equal to Z and RT, where Z is the compressibility factor. इसमें भी आप वॉल्यूम कौन सा लेते हो? रियल वॉल्यूम का मतलब क्या है? रियल वॉल्यूम का मतलब वो वॉल्यूम है जो पूरे कंटेनर का अवेलेबल है. That means indirectly it is the volume of the container. So gases के लिए हम लोग बोलेंगे कि the real volume is the volume of the container. That is the real volume. Also in ideal gas equation we say that the ideal volume is the volume of the container. Right. Now solids and liquids में ऐसा नहीं होता है. तो solid में क्या होगा? See, if I have this container, closed vessel, यहाँ पे reaction हो रहा है, कोई solid substance है. अब ये solid है. इसका अपना कोई वॉल्यूम रहेगा. तो जब मैं इसका एक्टिविटी बताऊंगा, तो एक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड is moles of the solid upon volume of solid. I cannot say volume of container now. वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे volume of container मत लिख देना. So the activity of a solid is what? I mean, the active mass of the solid is what? Moles upon volume of solid. तो volume of container लिखना गलत होगा यहाँ पे. तो अगर मैं इसको लेता हूँ अपना active mass, then what will happen? Let's see that. Now during the reaction, active mass of a solid or a liquid remains constant. Now why? देखो, जो एक्टिव मास ऑफ अ सॉलिड है, अगर मैं ये रिएक्शन देखता हूं, तो एक्टिव मास मैं लेता हूं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो ऐसा हो जाएगा. ओके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं ले सकते, वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है इसमें. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. मोल्स इज ग्राम्स बाय मोलर मास. Now, mass upon volume may be density. Density is constant. Molar mass is also a constant. Density upon molar mass will become a constant value. इसके लिए कोई भी सॉलिड या लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है कि उसका जो एक्टिव मास होता है वो डेंसिटी अपॉन मोलर मास होता है उसका. Which means I am not supposed to take this into consideration when I find out the value of Kc. So Kc के अंदर इसके लिए concentrations of solids and liquids are not included in the expression for Kc. तो हम लोग सिर्फ गैसेस का ही लेंगे Kc के लिए और Kp के लिए भी. तो अगर मैं बोलूं कि जो रिएक्शन दिख रहा है आपको अभी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, इफ आई आस्क यू कि इसका Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो क्या लिखोगे? इसका Kc विल बी इक्वल टू concentration of carbon dioxide, it is moles of carbon dioxide per liter of the container to the power of 1. That's all. हो गया इसका एक्सप्रेशन फॉर Kc. This will be the expression for Kc of the reaction. So solids will not be included.
इसी का अगर मैं बोलूं Kp क्या होगा? Kp will be partial pressure of carbon dioxide at equilibrium whole to the power of 1. हो गया. Right. So solids and liquids are not supposed to be included in expressions of equilibrium constants. Next comes relation between Kp and Kc. मतलब Kp और Kc आपस में कैसे रिलेटेड है? I have shown you the starting point for this derivation. Try to complete it and then we'll discuss after 2 minutes. Look at this and try to complete this, and then we will see what result we obtain.
Okay, so now it is straightforward. I can say this Kp and partial pressure को मैं लिख सकता हूँ N by VRT, right? PV is equal to nRT से, where N is the number of moles present at equilibrium. ऐसा करके आ जाएगा एक्सप्रेशन. ऐसे लिख सकते हैं इसको. Delta Ng is same as what we have done earlier in thermodynamics. Now this expression is Kc. इसको Kc लिख सकता हूँ मैं. Nc upon V is nothing but what? Concentration of C. Nd upon V is what? Concentration of D. Na upon V is concentration of A, and Nb upon V is concentration of B. V is the volume of the vessel. So this is the ultimate result. Kp is equal to Kc into RT whole to the power of delta Mg. R को आप यहाँ पे 0.082 लेने वाले हैं अगर पार्शियल प्रेशर्स आपके एटीएम में है. ओके, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में पूछते हैं कि for which of the following reactions is Kp same as Kc? So Kp will be equal to Kc when delta Ng is equal to 0. So when delta Ng is equal to 0, then Kp is same as Kc. चलो एक क्वेश्चन करो. Theory and derivations are done for the day. I have already sent you the PDF. आज सुबह भेज दिया मैंने सर. अब एक क्वेश्चन. Try to solve this question on your own. It's a simple question. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है
Start solving. And I have told you, if nothing is mentioned about the units of pressure in this chapter, मतलब क्या है, ATM में लिए गए हैं. Start. Okay, this is the first step. Now what next?
अभी क्या होगा? यहाँ पे 0 मोल्स, 0 मोल। यहाँ पे कुछ पता नहीं है तो ले लेते हैं। So I can say partial pressure of ammonia will be the mole fraction of ammonia, that is 2x upon 2x plus x, which is equal to into total pressure. Right. So 2x upon 3x, which means 2 by 3 times the total pressure. यहाँ पे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो टोटल मोल्स लेते हैं, remember we are not taking into consideration solids and liquids. That is why I have ignored this. इसके लिए 3x आ रहे हैं टोटल मोल्स, क्योंकि सिर्फ गैसेस के ही लेते हैं. Partial pressure of CO2 will be x upon 3x into total pressure, that is mole fraction into total pressure. ये हो गया partial pressure of CO2. Can I say that partial pressure of ammonia is nothing but equal to 2 times partial pressure of CO2, right? Partial pressure of ammonia is 2 times partial pressure of CO2. Yes, sir. हो गया यहाँ तक? हो गया. So Kp will be equal to partial pressure of NH3 square, because coefficient of NH3 is 2, multiplied by partial pressure of CO2 to the power of 1, because coefficient of CO2 is 1, upon reactant कुछ है क्या? है, लेकिन solid है, इसके लिए Solid है. तो कुछ नहीं लेंगे. हो गया यहाँ पे. Kp is given to you as 0.5. I can write here this as 2 times PCO2, because partial pressure of ammonia is 2 times PCO2. Two square is 4. यहाँ पे आ गया PCO2 whole cube. 0.5 by 4 is 1 by 8. One by 8 can be written as 1 by 2 whole cube. And therefore PCO2 is equal to 1 by 2 ATM. PNH3 is how much? 2 times PCO2. Okay. Write down this question, I mean the solution to this question properly. So moles of solids are not taken into consideration while calculating the mole fraction. फिर इसमें टेम्परेचर क्यों दिया था? ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट है दिखाने के लिए कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर केपी का वैल्यू ये है. अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो केपी का वैल्यू भी बदल जाएगा. तो इसी टेम्परेचर में सब कुछ करना है, कहने का मतलब ये है. इसके लिए टेम्परेचर देके रखा है. Because the value of Kp depends on temperature. So if they are measuring the temperature, that means they want you to carry out all calculations only and only for that temperature, so that you don't think much about Kp or Kc. मतलब सीधा वही लेना है Kp का वैल्यू जो देके रखा है.
इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार वो जो 10 रिएक्शन है वो याद कर लो, जो 10 के 10 रिएक्शन रिवर्सिबल है वो याद कर लो। उनके अलावा अगर कुछ रहेगा तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा, लेकिन ये 10 आपको याद करने ही पड़ेंगे। Okay, thank you.